And if the government is just reversing the decision of the Supreme Court in this matter after the judgment, that 5-judge judgment, I don't want to go and repeat what other members have said. I think it is a very sad, it will be a very sad day in the history of the democracy of India. And so far as other colleagues are saying that, talking of the emergency, today we have a undeclared emergency which is worse than the one which was done by Madam Gandhi. And the way the selection committee is supposed to select the election commission, then there is no point we should have a 3-member committee. Let the Honorable Prime Minister select a person. And so far as my colleague from the Biju Janata Dal talked about the CAG and other organization, I can personally tell him how it works. So fortunately, I don't want to put things in the house because it will be not very good. So I vehemently oppose this bill. And when our forefathers have given a constitution which really balanced between the judiciary, legislature and executive, and the way we are going, most of the institutions are being taken out of their powers, and whatever the ruling government says, they behave like this. So I vehemently oppose this bill. Yes. First of all, congratulations. It's wonderful to see you on the chair. It's a temporary arrangement. Yes, but when I saw it on the television in my room, it's coming across very, very elegant, very distinguished. Thank you. And very privileged to see you, holding the chair today. Thank you. I just want to share with my good friend and esteemed colleague, Mr. Singh, that he made a sweeping comment that there's an emergency and it's worse than the emergency of that time. Coming from a person from Bihar, coming from the land of Loknayak Jayaprakash Narayan, coming from the land which fought to maintain the unity and integrity of India, which is the repository of knowledge in this country, which stood up for high principles and values and fought against the emergency, so much so that thousands of political workers, for no fault of theirs except that they opposed the then government, with no allegations of corruption, no allegations of misdemeanor or any other sort, were put behind bars indiscriminately across the country. Probably thousands from Bihar also. Many who today are in the JDU, are in the RJD and all the various offshoots, as there are so many, it's difficult to remember their names also. But all of those were a part of the struggle against the emergency. It was totally unconstitutional, unwarranted, and an attack on democracy in the country. To make such a comment, where today we are all with great freedom able to speak in this house, where today there's freedom of democracy, freedom of speech, the media is vibrant, the judiciary is protecting the interests of the people of India, there's complete freedom across the country. And the only people behind bars are criminals, are people in whose houses you find 353 crores and counting cash, illegals, stashed away money, where the only people behind bars are murderers and criminals and land mafia and sand mafia and liquor mafia and arms dealers and defense dealers. Respected in leader this day and age of the House, to compare those days of emergency with today is a blot on the very thinking of your party and the esteemed member of parliament. Thank you, Leader of the House. But if you are talking about freedom, I think he used his freedom. Let's. उन्होंने कह दिया, आपने कह दिया, What I wish to convey
that we have seen enough of freedom yesterday. That was on display by the gesticulation, by the body language. What reference he made was metaphorically. Our metaphorical statement, if it is not made, what kind of democracy? I mean, you make new buildings, but there is no idea of democratic discourse. Democracy is never, ma'am. If JP was alive today, counterfactually speaking, he would have stitched an alliance of all progressive forces against their kind of politics. Thank you, ma'am. Long list of freedom struggle leaders. There's not a single leader from Pandit Nehru to Sardar Patel to Gandhi who did not stay in my house in Patna and Muzaffarpur. So let them not teach me what democracy is. And let me tell you, one of the Russian big oligarchs had come to meet me a month back. While having dinner in my house, he said, Mr. Singh, you are more unsafe than me in Russia. So let not anybody teach me what democracy is. And I have already been to jail for not being a criminal. I should have also taken 10,000 crores from the bank and stayed in London. But I decided I will fight here. Whether you put me in jail again, I'm not bothered. Mr. Brita. There's a tragic paradox that is in full display. Ma'am, you were not here yesterday. Yesterday the government was praising the Supreme Court for upholding the abrogation of 370. If at all an alien had come from some other planet, that person would have been completely taken aback the way in which the government is paying respects to the Supreme Court. Thank you, ma'am. Thank you, sir. If at all that alien continued for a day more, he would have been shocked to see that there is no relevance for the Supreme Court judgment, a 5-judge judgment. Sir, this is the classic somersault that is happening in the House. So the PM has been exhorting everybody, including my dear friend Agarwal ji, to make sure that the weddings are done in India. So there is a marriage of convenience that is happening here now. You want it to be a convenient proposition to make sure that the election commission is being controlled fully by Government of India. Sir, it's an absolute fact that the intention of the government is to circumvent the Supreme Court verdict. What was the spirit and letter of the Supreme Court verdict? It was to make election commission independent, impartial and neutral. But the bill which you have brought forward is contrary to the spirit of independence and fairness. Sir, I thought that the government would be willing and yielding for comprehensive electoral reforms. Sir, I'm afraid that we are not seeing the elephants that are roaming around in our drawing room. John Bitas. Sir, the two pillars of the electoral practice now, one is money power and muscle power. Yes. I would have wished the government, if at all there was a comprehensive electoral reforms that was being brought forward, so that it would have cleansed the political arena. Sir, now with this bill that is being passed, I would say that let us close down Nirvadan Sadan, let an outhouse of the ministries being used for accommodating the election commission. Why do you want to waste time, sir, and energy, money? That is not required, sir. Sir, the Supreme Court had said that if at all there is no independence for the election commission, Mahesh Titmalaji, I invite your attention. The Supreme Court said, if at all there is no independence, it would lead to disastrous consequences. What does it mean? This bill is inviting disastrous consequences because you are making the election commission dependent, an appendix of the executive. Precisely that is your intention.
Sir, even the search committee, the Honorable Ministry is going to head it. Even if the search committee decide on 5 people or 6 people, the selection committee can pick up somebody outside the search committee. They should have been a little more magnanimous towards the screening committee. They should at least respect the screening committee. Why is it that even the screening committee has been treated like that, without any courtesy? Sir, clause 8(2) says that selection committee may also consider any other person than those included in the panel by the search committee. So it defeats the purpose of the search committee, sir. Sir, electoral bonds, that is another contentious issue. It is with the Supreme Court. I don't want to comment about it. Yes. But the Home Minister had said that era of clean politics, and claims were made that it will lead to transparency and accountability in political funding while preventing future generation of black money. Sir, the same electoral bonds is opaque. That is a contention of the general public, according to me too. So, the scheme at very behest is opaque, undemocratic, and legitimizes corruption by the ruling dispensation. So the former finance minister, I would quote him, Subhash Chandra Garg, he was there when the electoral bond was being brought in. He said that, why do business or companies donate bonds? Because they are hoping for some favor or seeking to protect their businesses. This is what the former finance secretary, who was instrumental, who was part of that team which brought the electoral bonds, said it. So what does it mean, sir? Sir, money power and muscle power, how to curb it? Sir, according to a study of CMS, the money spent in Lok Sabha election in 2019, so a growth of 7 times from 1998 Lok Sabha polls. At that time, it was deemed to be 9,000 crore. Sir, 2019, the study says that at least 60,000 crore has been dumped for electioneering by the political parties, and major chunk would have been spent by Piyush Goyal's party. So now 224, it is going to double, sir. So any legislation that is being brought forward should be to cleanse the political system, electoral system. Instead of that, you want to make it more opaque rather than cleansing the system, sir. Sir, we all know the story of Mr. Ashok Lavas. What was his fault, sir? Sir, everybody got 2, 3 means, 4 means extra. Conclude. Yes, sir, I concluding, sir. You have made significant points. An honorable person, election commissioner, why was he ejected from his post, sir? So your election department, that is ED, was very active. There were raids conducted at his house, at his wife's house, son's house. He was ejected. And sir, it's a fact that even the big tech companies are being used to invade into the privacy, which has got cascading effect on the election, sir. Sir, one more thing, sir. What does it vitiate the electoral arena, sir? It's hate and hatred. So, in fact, though we go down in manufacturing, the manufacturing of fake news is very robust in this country, sir. So, these are the serious questions. Ramnath. Sir, I am rounding up, sir. I am rounding up. You made your point. These are the questions which... Okay. You have made good points. Sri Ramnath Thakur, honorable members, I have got इस बिल पर बोलने का मौका आपने दिया. One second. We will have voting at 6 o'clock. That is the sense of the House. 6. We have, and to have it at 6 o'clock, the Honorable Minister will give him the floor at 5:30. Please, Thakur sir. सभापति महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया. मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. मैं इस बिल के विरोध में
बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल जिस खुशी के साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर सत्ताधारी दल के लोग खुशी मना रहे थे, बोल रहे थे, आज क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, उसके आदेश को, उसके निर्देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं। मुझको आश्चर्य हो रहा है। सत्ता पक्ष के प्रथम वक्ता ने कहा जनता दल यू आरजेडी के बारे में कि ये लोग पारिवारिक गठबंधन के हैं, परिवार के लोग चलाते हैं। मैं जनता दल यू के एक साधारण सदस्य होने के नाते मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का कोई परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है। सभापति महोदय, आप सीनियर मेंबर हैं। ठाकुर साहब, मैं नहीं बोला। ठाकुर साहब, आप बहुत अनुभवी हैं। दो अनुभवी लोग जब बात करते हैं तो बस जवाब नहीं देते हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत चिंतित हूं। मेरा 58 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। मैं देखता हूं स्कूलों में हेडमास्टर की क्या स्थिति हो गई, वाइस चांसलर की क्या स्थिति हो गई, और वही चीज मैं आज देख रहा हूं कि एक भरोसा था पॉलिटिकल लोगों के बीच में, इलेक्शन कमीशन के बारे में आस्था था, उसके बारे में हम अब क्या सोच रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। मैं किसी दलगत भावना के से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी के नाते मैं बोल रहा हूं कि इस पर आप सोचिए, विचारिए, शोध कीजिए और तब बिल लाने का कृपा कीजिए। पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जो अंबेडकर का निर्देश था, अंबेडकर की जो सोच थी, उनका जो सोच था, उन्होंने जो विचारों से प्रकाशित करने का काम किया था, उस पर हम क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? उस पर हम विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? शोध क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर हम अमल करके उस पर चलने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हम पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारी सोच है और हमारा ये है। आपको याद होगा सभापति महोदय, एनटी रामाराव की सरकार गिर गई थी, राष्ट्रपति ने उनको, गवर्नर ने उनको हटा दिया था। विश्वास के साथ सभी एमएलओ के साथ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो आए थे दिल्ली में और राष्ट्रपति से मिले थे। एक आस्था था, राष्ट्रपति हमको न्याय देंगे, विचार देंगे और उस पर चलने का काम हम करेंगे। एनटी रामाराव को न्याय मिला और उस पर उन्होंने काम करने का काम। कंक्लूड। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चयन समिति का जो हमने देखा है, ये क्या है? कोई भी आदमी कहता है चयन समिति में हम घर के गार्जियन हैं और हम जो कहेंगे वही ना हमारे परिवार के सदस्य कहेंगे, और वो अगर एक आदमी विरोध में चले गए तो उसको समझाएंगे कि हम हेड हैं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। एक कहानी करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 20 वर्ष पहले हम में और हमारी पत्नी में कुछ विचारों
पर मतभेद हो गया और वो गुस्सा में कह दी कि मैं मैके चली जाऊंगी। कब? 20 साल पहले? 20 साल पहले। वो मर गई 20 मार्च 20 को। मैं मैके चली जाऊंगी। तो परिवार हमको चलाना था। अब वो गुस्सा में कह दी कि हम मैके चली जाऊंगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम मैके चली जाओ और बाल बच्चों को मैं नलिहाल भेज देता हूं और मैं अब ससुराल चला जाता हूं। फिर वही स्थिति हो जाएगी, फिर वही स्थिति हो जाएगी। आप जो ये कर रहे हैं, मान्यवर, क्या कर रहे हैं? प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, आप ये जो कर रहे हैं, ठाकुर साहब, क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब, इससे ऑनरेबल मेंबर, प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं ये घर घर की कहानी है। मैं प्रमोद तिवारी जी से असहमत हूं। मेरे को आज तक ऐसी धमकी नहीं मिली है। आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं कि आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिली। आप भगवान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आप कहें, सरकार सोचे। सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए, वापस ले लीजिए। कहे हमारे हम तो अभी शुरू किए हैं। हो गया, 7 मिनट से हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के संचालन में निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव का कोई भी कथित प्रभाव बिना पक्षपात के अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की चुनाव आयोग की क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा कर सकता है। ये है वर्डिक्ट, माने ये सुप्रीम कोर्ट का। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसको आप ऐसे हल्के में नहीं लें। थैंक यू सर। हल्के में नहीं लें। प्रोफेसर, निवेदन करना चाहते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव सेलेक्ट कर। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। ठाकुर साहब बैठ जाएं तब मैं बोलूं। सर 5 minutes, but since time has been limited to 5:30, 4 minutes. धन्यवाद श्रीमान। This is an apology, sir. 4 minutes is an apology. सर, Ziaji knows the difficulty of this chair. मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता की बात की थी और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब को उनकी अपनी सीमाओं में रहने के लिए कहा था। न्यायपालिका उस स्थिति में जब कोई चैलेंज करे संसद से बनाए हुए कानून को, तो जुडिशियल रिव्यू के अधिकार का प्रयोग करके उस पर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन न्यायपालिका थर्ड चैम्बर का रूप नहीं ले सकती, जैसे कभी अमेरिका की संसद को कहा गया था। राष्ट्रपति ने कुछ बनाया, उन्होंने रद्द कर दिया, संसद ने कानून बनाया, तो झमेला वहां हुआ था। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे यहां नहीं है। लेकिन अपनी बात पर आने से पहले मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा न्यायपालिका पर रिलाई न करें। अभी सिसोदिया की जमानत के वक्त सबने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। माननीय राम गोपाल जी, राम गोपाल, अब मुझे 1 मिनट बोलने नहीं, एक सेकंड। न्यायपालिका के न्यायिक आचरण पर न्यायपालिका के खिलाफ नहीं न्यायपालिका संसद के खिलाफ जा सकती, तो संसद के अंदर क्या कि मैं सही बात नहीं कह सकता हूं अपना? वो नहीं तो रहने दीजिए। आपने पहले मौलिक बात कही
दमदार बात है। हम सब न्यायपालिका की भी इज्जत करते हैं, कार्यपालिका की भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सशक्त रूप से अपने क्षेत्र में काम करेंगे। पर एक विशेष मामले को लेकर अगर करे तब तो ठीक है। नहीं, एक विशेष मामले को लेकर किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बिल संसद ने सर्वसम्मत से पारित नहीं किया था, वो मौलिक मुद्दा है, तो उस पर बोलिए। तो न्यायपालिका ने जनता की इच्छा का, संसद का की परवाह की, जब उनके ऊपर आया तो परवाह नहीं की, औरों के ऊपर चाहे हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। टीएन सेशन के जमाने टीएन सेशन का ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने लोगों को बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि सामने लोग टीवी पर देख रहे हैं कि पुलिस वोट नहीं दे रही है, पुलिस लोगों को मार रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हुए। तो अगर इस तरह के आपने देखा होगा, हम हर जगह देखा है सबने। मैं मिला जाके कमीशन से, कमीशन ने आंखें बंद किए रहे। इलेक्शन कमीशन की यही ड्यूटी नहीं होती सर। अभी वोट बढ़ रहा है, वोट कट रहा है, बूथ चेंज हो रहे हैं, आधा मोहल्ला यहां लगा है, आधा 3 किलोमीटर दूर लगा है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको पहचान लिया जाता है, जाति और धर्म से लाइन खींचते चले जाओ, लाइन खींचते चले जाओ। 50,000 वोट काट दिया, सुनने वाला नहीं कोई मुरादाबाद में, क्योंकि नाम से मुसलमान वोट पहचान लिया जाता है, जिसको चाहे उसको काट दो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो अगर इलेक्शन कमीशन में निष्पक्ष लोग नहीं होंगे, अगर वो बात नहीं सुनेंगे किसी की, तो डेमोक्रेसी क्या मतलब रह जाता है। डेमोक्रेसी का अर्थ ही यह है कि लोग अपनी इच्छा से, ईमानदारी से, फ्री और फेयर इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अपने ऊपर शासन करने के लिए सरकार को चुन सकें। थैंक यू। लेकिन हो कहाँ रहा है ये? इसलिए मैं शासन से कहना चाहता हूं, शासन में बैठे हुए लोगों से, कानून तो आप जैसा ला रहे हैं बनेगा ही वैसा। थैंक यू प्रोफेसर। नियत पे भी लोगों को संदेह है, लेकिन ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना इलेक्शन कमीशन में जिनके अपनी अंतरात्मा नाम की कोई चीज हो, जो अन्याय न होने दें। डॉक्टर सिर्फ आपके सारे के लक्ष्मण, डॉक्टर के लक्ष्मण, थैंक यू। मैम, यू हैव बीन हियर। Thank you, Chairman sir. I have given him for giving this extra opportunity to speak on this amendment of this. You have been very kind to everyone. Appointment of Election Commission. No, you have been very kind. Everyone has appreciated I it. stand here. So your sitting here has been a great challenge to me. This bill. Bharat supposed to be the largest democratic country in the world and mother of democracy. Sir, this appointment of Election Commissioner, the matter has been brought under the purview of Supreme Court. The Supreme Court has made it very clear. A temporary committee constituting Prime Minister, LOP and CJI until a law is enacted in the Parliament. But unfortunately, our friends, colleagues started saying that CJI has been removed from this 3-member committee. मैं बधाई देता हूं हमारे लॉ मिनिस्टर को। अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एन यूनियन मिनिस्टर, सब्जेक्ट टू करेक्शन, LOP, I don't think there is a opposition status even for this present Congress party in the Lok Sabha. In spite of that, our Honorable Minister is liberal enough to include as the largest party's leader also been included in the 3-member committee. And sensing that even in future also it may happen, भविष्यवाणी भी जानते हैं हमारे मंत्रिपद, इसलिए the leader of the party which has got highest number. So, ठीक है, आपको भी समय आएगा।
So there is no way in violation of the judgment, sir. They should introspect first. It's a purely a meritless criticism against this government on the appointment of these election commissioners. You all should introspect what has happened all these years. What was the methodology adopted in appointing the election commission at national level, even at state level? And how these election commissioners are functioning. I really appreciate one of our colleagues from BJD. If they start now suspicious on even returning officers, this democracy would have not survived. I ask the appointment of the chairperson and staff of the tribunals, national green tribunals. Who is the authority in appointing this? The same central government for the last many decades. And even the National Human Rights Commission, supposed to be the Prime Minister is the chairperson and the ministers concerned. And these people never brought a holistic law for regulating the appointment of CEC and election commissioners. The policy paralysis, though they were in power for more than 6 decades. So when the matter is brought to the Supreme Court, the government has tried its best to make it fulfill. One of the comments made by former Chief Election Commissioner, sir, by name O.P. Rawat, I quote, sir, the issue before the Supreme Court was not who will be on the selection committee. It was why did you, the earlier government, not enact a law as promised or laid down in the Constitution. So you make a law until then our suggested panel will select CEC and ECs. In the Constitution, Parliament is the supreme law-making body and Supreme Court has the power to judicially review the Constitution. So I don't think there is any issue in this. This is the statement given by O.P. Rawat, the former and Chief Election Commissioner. Sir, people have started and shown much respect and regards towards Supreme Court judgments. I fail to understand what happened when there was a judgment by Supreme Court on Shabanu case. What made the government to bring an ordinance? Was it not a political motive and superseding the Supreme Court judgment? And even then, when Sheshan was a Chief Election Commissioner, he was the man instrumental in bringing electoral reforms, right from implementing strictly the model code of conduct. And the same, the Congress government in '93, they have added 2 more persons to belittle T.N. Sheshanji. Mr. Gill and G.V.G. Krishnamurthy were being added to just belittle the powers of T.N. Sheshanji. And this is the attitude of the then government, Congress government, and they'll speak of democracy and they speak of internal democracy. And even 2009, the Chief Election Commissioner N. Gopalaswamy was recommended the removal of the person called Naveen Chawla. Earlier, our member has told that who is the secretary for former Prime Minister. So, sensing that he is in a partisan attitude, working as a member in the Election Commission, Gopal Swamy recommended for his removal. But unfortunately, the then government rejected the request of this Chief Election. This is the democracy which they adopted. Sir, apart from this, now our government has brought a 3-member committee apart from Prime Minister, LOP and Union Minister. So, before these so-called members of the opposition parties opposing this bill, they should not only introspect, they should also know what measures have you taken during the ensuration of the constitutional norms of separation of powers. What were they have the methodology followed. More extensive, even the quasi-judicial constitutional bodies like CAG
Yes, sir. UPSC, NCSC, NCBC, NCST, and so on. They never bothered. And in practice, it was the government alone they have decided. So finally, please conclude. By supporting this bill, I would like to make some recommendation, because the black money which is playing a dominant role in the present day politics, we have been witnessing how hundreds of crores of rupees now, the black money is now coming out. Sir, to eradicate black money from the politics, the government is also... Dr. Amir Azmi. And also... Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I get up to speak on this very important bill. But having listened to all the speakers, and especially the Honorable Law Minister, I wish that they had gone back to 1949 June Constituent Assembly debates and seen the extent of the debate that had taken place on this particular issue of election commission. And the only statement that came out of the whole debate was that election politics, election machinery and election should be completely out of the hands of the executive. There should be no executive interference, and this should be an independent autonomous body. Having said that, sir, I come back to the Law Commission report of 2015, where exactly 2 lines were said by the Law Commission in the report, and that was that the Law Commission said that there should not be any breakdown of rule of law. Now, rule of law which is meant in the democratic setup today is that there should be strong institutions, a vibrant democracy, and all institutions should be independently working for the people of this country post-independence. Now, coming to the Supreme Court and the Apex Court judgment of 2000 in the matter of 2015, which has been raked up by many. And I've also heard that some of them have said that there have been selective liking to the Honorable Apex Court judgments and selective not liking of the Honorable Apex Court judgments. Sir, the Honorable Apex Court in a matter of 2015 said that there was a constitutional vacuum because there was no procedure which was shown in a particular bill by Parliament, no law. So there should be the vacuum, that vacuum should be sorted out. And hence this bill has come today, the 2023 which says that the Chief Election Commissioner and other election commissioners bill 2023. So why the necessity for this bill? I would like to make some observations which I have seen in the public domain, that there have been instances where enlightened citizens have written to the Honorable President of our country, pointing out that there seems to be a crisis of credibility with this particular institution. We have seen that there have been instances where intelligent people and intellectuals and academicians have written very strongly that this institution needs a robust mechanism of transparency, a mechanism that is responsible to the people of this country. And hence you again come to a question, what does the Election Commission of this country do? So you can start from electoral bonds, you can start from electoral voters, electoral voter IDs, electoral rolls, and you can talk about all the dates and the schedules which are set by the Election Commission for every election, whether it's a Lok Sabha, Rajya Sabha, President, Vice President, or state legislative assembly elections. But the most important part is the silent period of the election, where the Election Commission plays kind of a supervisory role where the code of conduct comes into picture. That is where the transparent working of the Election Commission becomes completely open to the people of this country. And the elections are meant for the people of this country, and this voting system is meant for the people of this country. And so when we are talking about the Election Commission of India's setting up under this particular bill, the moot question comes that there is not a set of laws whereby the Election Commission functions. There are some certain kind of procedures which can be said that they are replacing the the strict law or the wordings of the law. And these procedures need to be transparent. These procedures, if they are done transparently, then the accountability is seen very visible.
Now for this, the main and the thrust of the bill should be that the composition of the election commission should be such that whatever I have said should be seen to be implemented. And hence, when we come to the composition, we come to the part where the Honorable Apex Court had put the word Chief Justice of India, where the committee should be of the Honorable Prime Minister, the leader of opposition, and the Chief Justice of India. In this bill, you find that the composition of this is the Honorable Prime Minister, a Cabinet Minister, and the leader of opposition. So sometimes you start wondering why there is a question or an iota of doubt, because the Cabinet Minister, if it's of the ruling party, where would the transparency or accountability go? And where would this be seen to have been exercised under this bill? Why should there not be an independent and an accountable component in this kind of compositions? Sir, when you talk about the Election Commission of India, the people of this country and also the world, they're watching that it's a vibrant democracy. When I went to 1949, the Constituent Assembly debates, it was just a country that had become independent after a long rule of subjugation. And at that time, the framers of the Constitution wanted a very, very robust and independent and accountable election commission which would decide the fate of the voters, the liking of the voters, the intent of the voters to bring in a democracy, bring in some kind of a ruling dispensation that would only cater to the democracy of this country and build democratic institutions and see that this democracy becomes a vibrant democracy. Sir, the institutions are meant to be for the people of the country and not for ruling parties. The institutions are meant to deliver fairness. And if an election commission will not be able to see that the elections are conducted in a free and fair manner, in a transparent manner, then where is the component of democracy and where is the way in which the governance model is being shown or projected to the world? And that brings us to the moot question whether this bill needs some rectification, whether the bill needs to be looked into on several other aspects. It has been functioning for a long while, but as I have said that there have been instances, I do not want to pinpoint instances because suddenly a huge group of people will get up and start shouting, but will not understand what is the backbone of bringing an election commission of India in a way where it caters to the need of the people of this country, and that is the transparent mechanism, the rule of law. Books and books have been written on the rule of law of this country that depends on the independent institutions. If a bill weakens the institutions, and we have weak institutions in place where anything can be distorted, then the functioning of the democracy cannot be said to be a vibrant functioning. And that is why when the Election Commission of India, which is the highest body, and the Central Election Commissioner, who will, I'm not going into the tenure and the salary and the period of the tenure, that happens in every other institutions. But the composition makes a difference because that composition will decide the accountability and transparency factor and the performance factor which will tell on the elections. Sir, when I talked about the silent period, nobody has touched upon that. But when there's a silent period, that is the time where the Election Commission has to function very strictly and has to be very vigilant, because if that code of conduct is breached, and when the voters are given that silent period to make up their mind where they want to vote, and at that particular time when a particular ruling dispensation comes up with some kinds of statements that we would be doing this, we would be doing that, we have done that, and tries to influence the voters, this falls in the arena of the Election Commission. And as there is not a stringent procedure or rule or law, it is governed by its actions, and these actions are dependent on who is sitting in that particular Election Commission's body. Hence, sir, coming back to the Election Commission's regulation procedures and how this model code of conduct and parties is being governed, I think that is the main crux of the whole matter. So the Honorable Apex Court saw that there is a constitutional vacuum, and this has to go in the arena of the Parliament, and the Parliament can only make a bill or pass a bill and make a law
Hence, the apex court's order was that this should be the composition. But when the framers, the parliamentarians sitting here and bringing a bill thinks that this can be changed, it can be brought in a way where it is not seen as independent composition, where it raises some kind of doubt, and hence this debate and everyone comes out with some point or the other. I think it's time that the Honorable Law Minister looks at this particular point of the composition aspect, because anyway the duty is going to be performed. You are in public eye, and I do not want to show what has happened in the past. I just mentioned a couple of them issues. Some of them are already pending before the Honorable Apex Court, where the Election Commission has been asked a question, and that depends, that pertains to several factors. Parties' money, parties' intentions, the way the party collects all the money, and how it is not transparent. All these are issues with the Election Commission. It's an administrative function, but yet these matters have gone to the Honorable Apex Court. We should not forget that. Of course, the functions of the legislative, the executive and the judiciary are all different, and the judiciary only interprets what is made by the parliament, and it is implemented by the executive. But here we have a body which also functions in a way where it interprets and executes both. So we have to understand that it's a unique body, and how this unique body has to be answerable to the people in order to see that we become a robust democracy. We need to set an example by shouting, by making sermons, by talking about that we are becoming the world leader. That's not going to matter. What you are doing on the ground is the matter before the people of this country. Thank you. Thank you very much. Shri R. Girirajan. Shri R. Girirajan ji. Thank you, Chairman, sir. I thanks to our party floor leader, Trichy Siva. Whenever the Honorable Supreme Court intervened to save the democracy, this union government shows its strength through this house and destroy the vicious views of the Supreme Court. Sir, earlier, the National Capital Territory Amendment Bill, it has been amended by this House with a brutal majority. Now, the Union government wants to make easy like puppets. The bill seeking to exclude the Chief Justice of India from the panel to select the Chief Election Commissioner and Election Commissioner is deeply flawed. Sir, this bill will undermine the very democratic foundation of the picking very important executives to oversee the election process in autonomous and neutral roles. This will provide the worst possible optics to the appointment of the election officials from among a set of the chosen bureaucrats or others by a panel of government officials. Soviet Premier Joseph Stalin once said, "It is not the people who vote the count, it is the people who count the votes." I think the present bill reflects the minds of the ruling dispensation execution of the ideas of the Joseph Stalin. In eroding the process of holding elections and counting votes that has been largely done in a favor way to satisfy a large working electoral democracy like India, the present rulers are opening a Pandora's box, may let loose forces that may come back to the bite. Sir, this bill, rather than strengthening the democratic fabric of our nation, poses a risk to the independence and authority of the Election Commission. The proposed legislation undermines the crucial role of the Election Commission plays in upholding the democratic principles of our country. I strongly urge every member of this House to vote against this bill and instead supporting a fully functioning democracy that India represents. Sir, now you are in Treasury bench. Before 1990, we were having a few members in this parliament. Now you are in a brutal strength. It will not continue tomorrow. One day will come. Your acts will be amended. Mind it, my friends. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Kanak Medla Ravinder Kumar. Sir, I am very thankful to you, sir, for giving this opportunity to participate in the discussion.
and the bill pertaining to appointment, service conditions and term of the Chief Election Commissioner of India and other election commissioners. Sir, this bill has been brought before this House to replace the already existing Act, which lacks certain aspects pertaining to the office of the Chief Election Commissioner and the election commissioners. The lacuna has been pointed out by the Honorable Supreme Court of India, and it observed until proper legislative mechanism is put in place, the order will prevail in the appointment, service conditions and tenure of the election commissions, Chief Election Commissioners. This bill provides a search committee and a select committee. The functions of the search committee is to form a panel of eligible candidates to the post of the Chief Election Commissioner and other election commissioners. After forming the panel, it will forward the list of names to the list of persons to the select committee. The select committee will be headed by Cabinet Secretary. The two officers not below the rank of the Secretary to the Government of India will also to the members of the Select Committee. The Select Committee will recommend to the President the name of the persons to be appointed with the Chief Election Commission. Accordingly, they will be appointed by at a glance, the provisions seems to be fine, but one goes to the provisions contained in Section 8(2) of the bill. The Selection Committee may also consider any other person than those included in the panel of the search committee. So therefore, the provision relating to appointment of search committee become infructuous. So in the other aspect, the powers conferred, such power is already conferred under Article 324 of the Constitution of India. Kindly conclude, sir. Kindly conclude. Sir, I have time is 2 minutes. I have 6 minutes time, sir. 2 minutes. So I am sure that's 6 minutes time. No, sir. Sir, coming to the, I thought I have 6 minutes, I prepared like that. I may be permitted. So, with regard to the section, section 6, section 8, it has to be amended. The coming to the other action, other provision with regard to the section is concerned, there is no mention with regard to the appointing authority of the select search committee members. Please conclude, sir. Please conclude. The conducting of elections in a free and fair manner is very most important. And criminality in electoral, representations of People's Act is another important. These two has to be looked into in connection with the Andhra Pradesh. That's with the criminality, the criminal there, from Lok and Sabha. voters also. 1 minute, sir. Please conclude. Please conclude. And deleted by the behest of the state government. That is to be condemned. The bills has to be. It requires recent reforms has to be looked into. Representation of People's Act to change the voters list, interference of the state government, and also dispose of criminal cases against the people's representatives, including the Chief Minister of Andhra Pradesh. Thank you. Message from Lok Sabha. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 12th December 2023 passed 1. The appropriation number 3 Bill 2023 and 2. The appropriation number 4 Bill 2023. The Speaker has certified that these bills are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy each of the said bills on the table. Dr. Dinesh Sharma, 2 minutes. No, sir. 2 minutes. जो लिखा उसी पे चलना 2 मिनट. मानवर, मैं बधाई देना चाहूंगा सम्मानित कानून मंत्री जी को कि उन्होंने एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संविधान के संरक्षण में लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए एक जो बिल ये लाए हैं, मैं समझता हूं उसने सभी पक्षों को छुआ है. पहले जो बिल था उसमें मैं कहूंगा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो अनुच्छेद 324 के अधीन अस्थायी चयन समिति का गठन किया गया था, उक्त अस्थायी समिति माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष
और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनती है और इस संबंध में विधि बनाए जाने तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया यह अस्थायी प्रबंध है। अब एक स्थायी प्रबंध दिए जाने का दायित्व एक लोकतांत्रिक परंपराओं को अनुरक्षित करने वाला, मैं समझता हूं, सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पर जिन लोगों ने कभी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पूर्णतः सम्मान नहीं किया और आज इमरजेंसी ऐसी स्थितियां आई, साहबानों के प्रकरण में विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय के निर्णय थे उनको बदला गया, लेकिन आज जो दिए गए तथ्यों के आधार पर पारदर्शिता के साथ में जो तमाम संशोधनों के साथ एक पूर्ण व्यवस्था को देने का काम इस विधेयक में किया गया है, उसके बारे में तमाम आपत्ति उठाई। मुझे आश्चर्य होता है इस बात को जानकर कि विपक्ष और खासतौर से मैं सामने बैठे हुए ऐसे लोगों को जो काफी समय तक सत्ता में रहे, उनके डर को मैं नहीं समझ पाया कि उनको डर किस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष रहेंगे चयन समिति में और उनके रहते हुए गलत कैसे हो जाएगा। क्या वो अपने नेता को जो प्रतिपक्ष नेता के रूप में कमजोर मानते हैं या वो ये मानते हैं कि अगले बार हमारा नेता प्लीज कंक्लूड, टाइम इज ओवर, allotted by your party। 5 मिनट का समय मान्यवर मुझे दिया गया था पार्टी की तरफ से। 5:30 मंत्री जी कह को बोलना सकता है। हूं कि आज ये विधेयक एक लोकतांत्रिक परंपराओं की एक निष्पक्ष प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए तमाम प्रकार के प्रावधानों को करते हुए इसमें इसको लाया गया है और जो लोग ये समझते हैं कि ये सार्वभौमिक नहीं है, जो ये समझते हैं कि इसमें पक्षपात हो सकता है, मैं समझता हूं भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग आपस में बेमेल गठबंधन में रहे उनका भी ये कहना है कि अगर आज जेपी होते तो आज निश्चित रूप में जेपी होते तो आज वो कांग्रेस की जो उन मनोवृत्तियां थी, जो संविधान के विरुद्ध जो इमरजेंसी लगाने की प्रवृत्ति उसका विरोध करते। मैं ये मानता हूं कि आज का श्री विनय विश्वम जी है पूर्णतः न्याय संगत और लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुरक्षण करने वाला ये बिल है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। सर, हाउ मेनी मिनट्स? 2 minutes. 2 minutes. No, sir. The total time allotted was 6 hours for this bill. In that way, we have a right to have 6 minutes. But it is written here for 2 minutes. No. Tell me the reason. Please start. Your time is started. In 2 minutes, how can I talk on the important bill? 1 minute. It is given to everyone 2 minutes. No, sir. Total time 6 hours. Your time is running, sir. Please start. So from now on, let us start for 5 minutes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, yesterday, this house saw a scene. Our friends of the BJP, all of them were very vocal in support of the Supreme Court. In high esteem, they placed the Supreme Court yesterday. And today, what you see, after 24 hours, they say that nothing is Supreme Court. They forgot their words yesterday. Sir, this is the BJP, sir. This is the BJP, sir. Sir, Ambedkar was quoted here very much. Our friend Shiva quoted him. And we all remember that words. That debate in the assembly, which was meant for the framing of the constitution, was very clear, sir. The categorical time is that Election Commission should be free from the executive interference, control. But they want to make it under the control of the executive, the Prime Minister. So for them, Ambedkar is only for certain hours, certain needs. Normally, they are following in the footsteps of Hitler, sir. Hitler has total disregard for the parliaments. In the 1930s, Hitler even banned the Reichstag, the German parliament. And these people are trying to sabotage the parliamentary democracy. The election, the free and fair elections are not important for them. That's why they want to make... Please conclude, sir. Sir, Sir, Election Commission made by the bureaucrats, controlled by the Prime Minister,
avoiding the dictates of the Prime Minister, is going to see that the one nation, one election theory of the BJP is going to make big damage to the country. And they want to make sure that only one party should do everything here. Sir, in 2018, Amit Shah made a statement for the workers of the BJP. Conclude, sir, conclude. Sir, last sentence. Amit Shah told, if we win the election in 2019, then for the next 50 years, we will control India. Sir, for that purpose, they bring this bill, sir. They want to make the election commission as a goat in their farmhouse. Thank you, sir. Thank you. In that way, श्रीमती महुआ मांझी and the objected, sir. सर, इस बिल के पारित होते ही जो सबसे बड़ा धक्का हमारे देश को लगेगा वो ये है कि विश्व दरबार में जो 140 करोड़ जनसंख्या वाले जिस भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और सबसे बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ चुनावी प्रक्रिया के लिए सम्मान की नजर से देखा जाता था, उस देश के लोकतंत्र की शुचिता संदेह के घेरे में आ जाएगी। मैं अपने पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूं। यह अनैतिक है, असंवैधानिक है और बाबा साहब अंबेडकर तथा संविधान सभा के सदस्यों की उपेक्षा है, अवहेलना है, असम्मान है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है, जो इस बिल के पारित होते ही असंभव हो जाएगा। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सत्ता पक्ष बहुमत में होगी तो वह चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव कैसे कराएगी? जनता उस पर कैसे यकीन करेगी कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी नहीं हो रही है? हो भी सकता है। आधुनिक दुनिया के बहुत बड़े चिंतक है फ्रांस के फूको और इटली के अगम्बेन। उन्होंने भी कहा था कि जनतंत्र की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि ताजी जनतांत्रिक हवाएं अंदर आ सके। इससे देश मजबूत होता है। मगर लगता है कि इन दिनों आजकल मुसोलिनी और हिटलर ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। अभी जो चुनाव आयोग है वह देश का चुनाव आयोग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जो बिल है वो चुनाव आयोग को भारत सरकार का चुनाव आयोग बनाना चाहता है, क्योंकि अगर आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटा देंगे और उस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को शामिल करना चाहते हैं, तो आयोग ठीक वही करेगा जो सरकार चाहेगी। आखिर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर क्यों करना चाहती है? बिल के अनुसार सरकार उनकी सैलरी भी इस तरह तय करना चाहती है कि वो सरकारी आदमी लगे। अभी उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी मिलती है, जबकि सरकार नए बिल में उसे मुख्य सचिव के बराबर रखना चाहती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और एजेंसियों के दुरुपयोग का इन दिनों सरकार पर लगातार इल्जाम लग रहा है। चुनाव आयोग को भी क्या वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? आखिर इस बिल की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों नहीं होना चाहिए? और इस कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, तो उसमें अगर वोट होगा तो उनके पक्ष में होगा, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की क्या जरूरत है? और सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है या कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने अनंत काल तक शासन किया। सत्ता परिवर्तन यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि हमारे साथियों के पास इसका कोई दृष्टांत है तो बताए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं सत्ता पक्ष से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ महोदय कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये तख्तो ताज का दौर नहीं, राजों का दौर नहीं, ये जनशक्ति का दौर है। इंदु बाला गोस्वामी, सब कुछ 2 मिनट। हमारा यह प्यारा सा देश, मगर लोकतंत्र पर प्रहार नहीं। धन्यवाद। सुश्री इंदु बाला गोस्वामी, 2 मिनट। नहीं है? नेक्स्ट अब्दुल बहाव जी, नहीं है। नीरज शेखर जी, 2 मिनट। नीचे से संशोधित सूची मंगा लीजिए, संशोधित सूची आ चुकी है। मंगाओ जी, मंगाओ। अजीत कुमार भुयान जी, 2 मिनट। बोलिए सर। Democracy and the fundamental rights are the soul of the Indian Constitution, and the Election Commission has been a very strong instrument to utilize the confidence among people that their democratic right will be saved by getting elected representatives in a free and fair election process. Sir, there has been an amendment in the process and the manner of appointment of the Election Commission way back in 1991, when 1-member commission was converted into 3 members commission
to avoid monopoly of one individual, and that amendment was supported by all political parties, including BJP. But now the amendment that has been put for consideration in the Parliament has no consensus component and rather a bulldozing act. Sir, the Election Commission must be perceived and honored as independent, then democracy will flourish. I am sorry to say the election of an election commissioner will be compromised if the government of the day has a majority monopoly. The removal of the Chief Justice of India from the selection process will certainly create a strong doubt in the minds of the people of opposition that the incumbent government has malicious intent. Sir, my sincere suggestion will be, if the government of the day seems to be seen as judicious in amendment of ECI Act, Prime Minister and leader of two major political parties should be made members of the selection process. Sir, two members from the government and a third member from the opposition cannot be a fair and unbiased selection committee of the ECI appointment process. In the wisdom of every layman, the proposed bill is nothing but a majority bullet to the soul of the Constitution. However, the bill that has been put for consideration is not going to create confidence when already several political parties and individual constitutional experts have expressed doubt about the partiality of the ESI. Why not two major opposition party leaders in Lok Sabha and the Prime Minister constitute a panel of the selection process to appoint the Election Commission of India? I will conclude, करो सब कुछ, लेकिन ऐसा ना करो कि लोगों का विश्वास ही टूट जाएगा लोकतंत्र से। लोकतंत्र रहेंगे तो आओगे जाओगे, लेकिन अगर नहीं रहेगा लोकतंत्र तो कैसे फिर आओगे? थैंक यू। सुश्री कविता पाटीदार 2 मिनट। माननीय सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूं। लेकिन अपनी बात की शुरुआत करने के पहले अभी एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राजा ऐसा नहीं रहा जो अनंत काल तक रहा है। मैं उसका जवाब देना चाहती हूं कि राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित, बिना किसी भेदभाव के लिए राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले लोगों को इस देश की जनता सिर माथे पर बिठाकर चलती है, और आने वाले अभी 3 राज्यों का जो परिणाम हुआ वो इसका समक्ष उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, भारत का चुनाव आयोग भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को रीढ़ प्रदान करता है। यह चुनावी अखंडता का संरक्षक है। यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और निष्कासन के प्रावधानों को एक रूपता प्रदान करता है। अभी मैं 2 बिंदुओं पर बोलना चाहूंगी माननीय महोदय। कुछ सदस्यों ने जो विपक्ष के हैं उन्होंने ये कहा कि ये बिल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यह विधेयक चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही लाया गया है। न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से केवल तब तक करने का प्रावधान किया था जब तक कि संसद एक कानून पारित नहीं कर देती। वर्तमान विधेयक केवल न्यायालय द्वारा फैसले में दिए गए निर्देशों को पूरा करता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार अंतिम संसद को होता है। और चूंकि न्यायालय ने एक तदर्भ समिति बनाई थी, न कि स्थायी, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह मापदंड तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संसद इस मामले पर कानून नहीं बना देती, और ये कानून बनाने की प्रावधान आज इस संसद में शुरू हो गई है। महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना है, जिसमें विधेयक में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की परिभाषा, नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यताएं, खोज और चयन समिति की स्थापना, कार्यकाल की अवधि, वेतन, इस्तीफा, निष्कासन, पेंशन आदि शामिल है। एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में बोलना चाहूंगी माननीय आपके महोदय, आपकी अनुमति से, जो बहुत जरूरी है, कि
वास्तव में इस विधेयक के साथ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की भूमिका भी होती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में विपक्ष के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या विपक्ष द्वारा शासित कोई भी राज्य अपने Chairman, sir. 2 minutes. Thank you. Sir, Judge. Thank you, Manya Kavita ji. Thank you. Sir, I was holding as a election commission also when I was Minister of Law and Justice of Company Affairs. During 98-99, I was the law minister, and also so many law ministers we have seen. 77 years, why the bill has not come, I couldn't understand. Now, recently, because of the Supreme Court interference, the bill is coming. I don't know what is the necessity, this one part. Second, sir, as for 71 years, we have the election commission conduct the elections very fairly. Otherwise, we would not come here. What is that? Therefore, we cannot blame the election commission bringing this kind of bill, one thing. Second, regarding some of the members from that side, dynastic politics, they said. As far as the ADMK party is concerned, our party General Secretary Edapadi Palaniswamy made it clear in the ADMK party there cannot be any dynastic politics. That what followed by Anna and also MGR, Amma, all we never followed the dynastic politics. It is a democratic way our party is functioning. In that way, we follow that. Second, sir, regarding the, when I was law minister, at that time, Gill was the election commissioner, I know very well. I never interfered, and also you functioned independently. Sir, now, you know, you appointed me as chairman of the assurance committee. The election reform for that, we called the election commission to appear before the committee. The election commission said we cannot appear before the committee because we are the independent body. You can call the only ministry. Therefore, such a way, the election commission is still having independent functioning. Government is not interfering. Thank you. I don't think there is any necessity this kind of. Deepak Prakash, 2 minutes. मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हूं सर। यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया जो अमृत काल में, ये गागर में सागर भरने वाला बिल है सर। और ये विधेयक 2015 की रीट के बारे में कांग्रेस के कई सदस्यों ने चर्चा की। वो आधा अधूरा निर्णय को सदन के पास ला रहे हैं, लेकिन सच में ये बिल, ये विधेयक जो है सो इससे निर्णय के अनुसरण में लाया गया है। उसी अनुबर्णमाल बनाम भारत संघ के जो निर्णय आए थे उसी के अनुसरण में लाया गया है, और उसके अनुसरण करते हुए सदन को अधिकार है कोई कानून बनाने का और कोई कानून को निरस्त करने का। और हमको फक्र है, हम सब लोगों को फक्र है कि हम उस सदन के सदस्य हैं जहां कानून बनता है और कानून को निरस्त किया जाता है। यह सदन, इसमें इस पूरे विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है सर, तथा लोकतांत्रिक ढंग से इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई गई। और मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में कांग्रेस के कालखंड में जब नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी तो पहले क्या सर्च कमेटी होती थी क्या? पहले कोई चयन समिति होती थी क्या? पहले कोई कांग्रेस के समय में न सर्च कमेटी होती थी, न चयन समिति होती थी, और खाता ना बही, जो एक परिवार कहे वही सही होता था दोस्तों, यही सही होता था। इसलिए मैं सामने बैठे हुए कांग्रेस के मित्रों, विपक्ष के मित्रों से इस चिंता को, बस 1989 में जब चुनाव आयोग में एक सदस्य होता था तो उस वक्त एक ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 लोगों को जोड़ दिया था। उस वक्त नियुक्ति की प्रक्रिया कहां चली गई थी? 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उस वक्त फिर एक सदस्य, 1 मिनट सर, हमको संरक्षण दे दिए सर, 1 मिनट। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो फिर से एक आयुक्त की नियुक्ति हुई, लेकिन 1993 में जब सेशन के द्वारा चुनाव आयोग की सुधार की प्रक्रिया तेज हुई तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक आयुक्त को बना करके श्री जी के वासन सर, 2 minutes.
Sir, as a modern democracy, the mammoth onus of conducting election is on the CEC, sir. We have witnessed ballot boxes being carried through rough areas in this country, sir. As part of a successive exercise of voting for crores of people in the country, sir, my party feels that time to time it is necessary that we review the functioning of electoral system, streamline procedures, and also provide adequate resources for smooth conduct of elections, sir. As part of this exercise, successive governments have brought amendments to electoral laws like the Representative of People's Act, sir. Today, the law is enacted with lot of riders, sir, to get the confidence of the voters, sir. Election committee, selection committee, search committee, qualification committee, so that free and fair election will take place in the country, sir. I am sure, sir, lot of members concerned, minister will address, sir. With this, I conclude, sir. Thank you, sir. Very effective. Sri Ajay Pratap Singh, 2 minutes, sir. आदरणीय सभापति महोदय, सदन में जो बिल प्रस्तुत हुआ है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे साथियों ने इस बिल के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं। हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, लेकिन मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस देश में चुनाव में कदाचरण के कारण अगर किसी का चुनाव निरस्त हुआ है, देश के ऐसे पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनके विरुद्ध फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप देश को एक इमरजेंसी भोगनी पड़ी थी। दूसरा, मैं इनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग की ताकत का एहसास टीएन शेषन साहब ने इस देशवासियों को कराया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता क्या होती है, चुनाव आयोग की निर्भीकता क्या होती है, तो चुनाव आयोग के पांव में बेड़ी डालने का अगर काम किया है तो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए आज जब ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात करते हैं तो इनकी बातें थोड़ी सी बनावटी लगती हैं। हमारे साथियों ने इस बहस में भाग लेते हुए कहा है कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधान में जो चयन समिति बनाई गई है उसमें विपक्ष के नेता को रखा गया है और बहुमत सत्ता पक्ष का रखा गया है। और जो वोट की बात करते हैं, अगर विपक्ष के नेता को रखा गया है, सत्ता पक्ष के लोगों को रखा गया है, तो आपस में डिस्कस करके एक अच्छे निर्णय पे पहुंचने के लिए कहा गया है। हर समय हर जगह पर वोट की बात नहीं होती है। इस डेमोक्रेसी का अर्थ है चर्चा करना, चर्चा के पश्चात निष्कर्ष निकालना और इस देश की बेहतरी के लिए कुछ काम करना। जो चयन समिति बनाई गई है इस उद्देश्य से बनाई गई है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंट श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, 2 मिनट्स। मेक मोस्ट ऑफ मैं इट। इतनी लंबी स्पीच बनाकर आती हूँ, 2 मिनट की टाइमिंग की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है लिटरली, सर। The world record. The world record for 100 meters is 9 seconds. Thank you so much, Honorable Chairman, sir. सर, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना, इलेक्टरल रोल्स करना, इलेक्टरल रोल्स में जो अडल्ट हैं जो वोट करते हैं उनको एनरोल करना ही नहीं होता है। ये भी होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिस्प्यूट होती है या स्प्लिट अराइज करती है तो उसमें निर्णायक डिसीजन और निष्पक्ष डिसीजन लेने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। महाराष्ट्र में 2 पार्टीज का स्प्लिट हुआ, एक का अभी भी डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, एक का सुप्रीम कोर्ट में। मैं बस यही कहना चाहती हूँ सर, अगर इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस 2:1 होंगे तो ये निष्पक्ष कहीं से नहीं होंगे। हर बार एक डिसीजन में बायस ही होगा। और सेक्शन 8 जो इसमें इंट्रोड्यूस किया है उसमें ये हो गया है 1 वर्सेस नन। अगर प्रधानमंत्री जी ये निर्णय ले लें कि ये जो सर्च कमेटी के चॉइसेस हैं, सिलेक्ट कमेटी के चॉइसेस हैं, उनको किसी का पालन नहीं करना है, उनका खुद का एक कोई डिसीजन होगा, उसको भी मान्य रखा गया एज पर सेक्शन 8। तो मेरा मानना बस ये है, और रिक्वेस्ट क्योंकि 2 मिनट, अच्छा बस 50 सेकेंड और है सर। मेरा मानना बस यही है सर कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोर्ट करूंगी तो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने थैंक यू। अरे सर 50 सेकेंड है, अभी 40 सेकेंड है सर।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो स्पिरिट में कहा था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से इसको दूर रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी स्पिरिट में अपना ये जो उनका वर्डिक्ट था दिया था। तो उसी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन हैज टू बी टोटली फ्री एंड फेयर ऑफ बायस, और वो मैं आपके माध्यम से श्रीमती कहना वंदना चौहान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। 2 minutes, ma'am. Sir, the Election Commission plays an exceptionally important role in upholding the democratic structure of our country, sir. Test of credibility of the Election Commission is not only in the efficiency and the fairness of election, but also in the neutrality where Election Commission has to show that it does not bow down to the ruling party, sir. Lately, turning a blind eye by the Election Commission when the ruling party netas delivered hate speeches or resorted to indecent character assassination or quoting false facts and figures, and on the other side, sir, putting behind bars members of the opposition, even at the slightest slip of the word or seemed like a slightest slip, shows the changing role of the once extremely credible Election Commission, sir. Sir, in my limited time, I will just touch upon 3 points. Sir, first question I would like to ask the Honourable Minister, why has the government not included the Chief Justice of India in the selection committee in spite of a specific directive in the judgment, in the Supreme Court ruling? Second, sir, with so much executive control with the Election Commission, will it not become a yes man of the present dispensation? Third, sir, Clause 6 says that the search committee is supposed to submit 5 members on the panel. So why only 5? Why not all members? And that too, after submitting the 5 names, it's up to the selection committee whether they want to accept it or not, or just shun it totally. Sir, with elections around the corner in 2024, with the sudden introduction of the bill, that too bypassing the order of the Supreme Court, the move is suspect, sir. This bill in the present form, my submission, sir, is a mockery of the expectations of the people and the democracy as a whole. Thank you, sir. Shri Arjun Meghwal. Arjun Ram Meghwal. On a point of order, I'm not going to fight, sir. Just on a point of order, that's all. My point of order, sir, is Rule 35, which I want to place on record. Rule 35, we have allotted, Business Advisory Committee has allotted 6 hours for this discussion. You were not I know, sir, we've had a discussion at the back. The government has forfeited 2.5 hours of time, of its own time. Honorable member, yes, you were sir. not present in the House. Sir, Sense of the, I will place on record. Yes. No, it will not go on record. Once again, nothing will go on record. I have not given the floor. I had taken sense of the House. Leaders had spoken to me. The House had authorized it. Anyone questioning the House, I'm not questioning, sir. if you are not present, no one can help you. Sorry. No, how can you? You are putting on record something which the House has approved. Sense of the House was taken. House is supreme. We can't allow this. I have gone by the House sense, Honorable Minister, to reply the discussion. धन्यवाद सभापति महोदय। अभी थोड़ी बात रिप्लाई के बाद क्लैरिफिकेशन ठीक रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज जो चर्चा हुई है बिल पर, मैं आभारी हूं सभी ऐसे माननीय सदस्य जिन्होंने भाग लिया। चर्चा शुरू की श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कांग्रेस से, और समाप्त की वंदना चौहान एनसीपी तक। 26 लोग बोले। कुछ लोग जल्दी में बोले होंगे, लेकिन सुझाव बहुत शानदार थे, इसलिए मैं सभी का ही आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से। चेयरमैन सर, एक 91 में एक एक्ट आया जिसमें एक कमी रह गई थी। अदरवाइज ये
ये हाउस में अभी चर्चा में ही नहीं आता। अब 91 में कैसे कमी रह गई उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। एक एक्ट बनाया, क्योंकि आर्टिकल 3 to 4 में पार्लियामेंट एक्ट बनाए, ये संविधान निर्माताओं ने कहा था, लेकिन गलती रह गई, 91 तक नहीं बना। 91 में बनाया, उसका शीर्षक था द इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। तो जब कोई PIL में कहा तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट में तो आपने एक्ट ही नहीं बनाया। और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 3242 में यह कहा था कि पार्लियामेंट के द्वारा इसके अपॉइंटमेंट को, प्रक्रिया को लेकर के कानून बनाएंगे। ये एक लिमिटेड पर्पज के लिए मैं आपके बीच में आज खड़ा हूं। अब जब 91 में इसमें कमी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कानून बनाओ। तो कानून बनाने के समय उन्होंने जब तक कानून नहीं बने तब तक उन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, और बार बार उसी का ही जिक्र कर रहे थे कि संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान का कहना, संविधान ने कहा उसको नहीं मानते हो। मैं, आप चूंकि संविधान के ज्ञाता हैं सर, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 3 to 4 भी संविधान निर्माताओं ने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा संसद कानून बनाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए। और आर्टिकल 50 भी, चेयरमैन सर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आर्टिकल 50 भी संविधान निर्माताओं ने ही बनाया, जिसका पर्पज है सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये सेपरेशन ऑफ पावर भी तो आर्टिकल 50 है। हम उसके तहत ये बिल लेके आए हैं। नहीं, लेजिस्लेचर में भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हाँ, लेजिस्लेचर में भी डिफरेंस नहीं करेगी, बिल्कुल। सब अपना अपना काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, लेजिस्लेटर अपना काम करेंगे और जुडिशरी अपना काम करेंगे। ये जो आर्टिकल 50 है, ये संविधान निर्माताओं ने तो डाला साहब, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं, हम भी मानते हैं। और हमें सुरजेवाला जी ज्ञान दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे, एक दो तीन उन्होंने कहावतें कही, तो एक कहावत मैं कहूंगा सर आप राजस्थानी है, मारवाड़ी जानते हैं, वो बैठे भी होंगे आप। सुरजेवाला जी शायद आपने हिये में कांक्षी नहीं फेरी, हिये में कांक्षी, हिया का मतलब यहाँ हृदय होता है, और उसको आप ऐसे कबीर की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि आपने अंदर झांक करके नहीं देखा। और अगर अंग्रेजी में बोलूं तो आप जो बोल रहे थे सारी कहावतें वो ठीक नहीं थी। आप दोज हु हैव नॉट इंट्रोस्पेक्टेड देमसेल्फ, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। आपने नवीन चावला साहब को कैसे बनाया जी, पता है? MS गिल साहब को कैसे बनाया जी? आइडियोलॉजी सबको पता थी, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम आज एक लिमिटेड पर्पज के लिए आपके बीच में है। मैं दो चार जो मौलिक प्रश्न आए, जैसे अमर पटनायक साहब ने बहुत मौलिक प्रश्न उठाए। ये मैं कांग से नहीं फेरी, मैंने इतना ही कहा था। हिये मतलब मारवाड़ी में हिये का मतलब हृदय, गोएड, और कांग से फेरने का मतलब उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो निकलती है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो। जैसे कबीर ने कहा अंदर झांक करके देखो, तो इन्होंने अंदर झांक के देखा ही नहीं, हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। संविधान को भी नहीं, उन्होंने कहा संविधान से ऊपर कोई नहीं। भाई कोई नहीं, हम भी मानते हैं। आप भी पढ़ लीजिए ना आर्टिकल 50, आप भी पढ़ लीजिए आर्टिकल 3 to 4। आपने 91 में कानून में कमी क्यों रखी? मैं फिर बाबा साहब को याद करते कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949, इन्होंने भी कोट किया, मैं भी कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराई हमारे मार्ग में हैं और जिनके कारण जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती, जनता के लिए सरकार को जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद, उन बुराइयों को सुलझाने में विलंब नहीं करे। ये बुराई थी साहब, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस कोई भी कर जाता था। अब ये तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना साहब, सबको पता है। अच्छा, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? अब इस देश के जनता ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान का पहला वाक्य है, और जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना, और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। साहब ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये कैसा आर्गुमेंट कर रहे थे, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है क्या? और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो हमने इसमें सिलेक्शन कमेटी में दिया, उसका तो जिक्र ही नहीं किया जिसने भी बोला। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं साहब, है ऑपोजिशन लीडर इतना कमजोर है, ऐसे करके क्यों निकल रहा है? मैं आपके माध्यम से दो तीन चीजें कहता हूं साहब। ये लिमिटेड पर्पज के लिए बिल है। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में बिल
इंट्रोड्यूस किया था मैंने, 91 के एक्ट को हम रिप्लेस करके ये बिल लेके आए हैं। अपॉइंटमेंट का इसमें प्रावधान नहीं था, इसलिए अपॉइंटमेंट का प्रावधान इसमें जोड़ा है। और ये 2 मार्च 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मैंने उसमें यही कहा था। उन्होंने कहा कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनावे तब तक हम ये कमेटी बनाते हैं। तो कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ही लेकर के आ रहे हैं कानून। जो मैं अमर पटनायक साहब ने कहा रिमूवल, सर रिमूवल का प्रावधान जहां तक मैं समझता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके और उसी ग्राउंड के आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है, वही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में होगी। जहां तक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 to 4 में लिखा हुआ है। जहां तक इलेक्शन कमीशन को हटाने की बात है, इसके विषय में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत क्लॉज 5 के तहत प्रावधान है कि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। ये दोनों चीजें क्लियर है, जो आपने मुद्दा उठाया था, इसलिए मैंने इसको जिक्र किया। दूसरा, किसी ने कहा साहब ये जो चुनाव नहीं कराते हैं वो चुनाव को क्या जानते हैं साहब। अब साहब मैं भी जिले में जिला कलेक्टर रहा, उस समय तो हमने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, तो क्या हम चुनाव नहीं कराते थे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगी। सरकार भी निष्पक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में जो जितनी भी संस्थाएं वो निष्पक्ष तरीके से काम करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। है ही साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। हाँ, आप तो, मैंने अभी MS गिल साहब का नाम लिया, मैंने चावला साहब का नाम लिया। अच्छा, जिस समय अभी किसी ने जिक्र किया, ठाकुर साहब ने कहा या पता नहीं किसने कहा कि अभी JP होते तो हमारा विरोध करते। मैं स्पष्ट कहता हूं साहब, अगर जयप्रकाश नारायण जिंदा होते ना, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन 100% नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मनोज झा साहब नरेंद्र मोदी जी का ही समर्थन करते। सर, एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी मैं लेकर के आया हूं। जब ये मूल बिल आया था उसमें काफी चीजें आई थी चर्चा में, तो एक सरकार संवेदनशील है इसलिए सोचती है। माननीय मंत्री जी, जी रणदीप सुरजेवाला जी ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, उन पर तो आप सहमति व्यक्त कर सकते हो। इन्होंने खास तौर से 4 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, मैं सहमति प्रकट करता हूं। हाँ, ये मतलब ये नहीं, ये निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता, मुझे याद भी है सर, सुचिता सुचिता। फिर इन्होंने अनुरोध किया था कि इनका संरक्षण कीजिए। बोलिए। इन्होंने हिये में कांक्षी नहीं फेरी सर, वो विषय एक ही था। देखिए सर, जो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आया हूं, इसमें एक क्लॉज जो 6 था, उसमें सर्च कमेटी, उसको थोड़ा हमने चेंज किया है। वो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी, अब वो लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में, और 2 सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं। सैलरी का विषय जो कई सदस्यों ने रखा, त्रिची सुहा साहब ने भी रखा सैलरी का विषय, लेकिन ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी का प्रावधान कर दिया गया है। कंडीशन ऑफ सर्विस, ये क्लॉज 15 में हमने एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है, जिसमें राष्ट्रपति रूल्स को नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे, ये प्रावधान हमने कर दिया है। और एक हमने क्लॉज 15A जोड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महबूब नगर में तेलंगाना में एक विषय आ गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को किसी ट्रायल जज ने नोटिस भिजवा दिया था, तो प्रोटेक्शन से संबंधित एक क्लॉज हमने जोड़ा है 15A में। CC या EC अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे, ड्यूटी करते समय सुनवाई या कोई भी आदेश देंगे, तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये प्रोटेक्शन की बात हमने कही है। मैं 2-3 चीजें और कहकर के अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप भी 6 बजे तक कह रहे थे वोटिंग का विषय। एक आपने कहा कि IAC क्यों, माननीय साई सुरजेवाला जी ने कहा था
अब तक तो 47 से तो ये 51 और 2 से तो चुनाव हो ही रहे ना सर। चुनाव आयोग की शाख भी बढ़ी है देश में, तो अब तक तो कोई गड़बड़ हुई नहीं ऐसी। और ये कह रहे हैं कि एक हमारे चड्डा साहब कह रहे थे, बैठे हैं शायद, ये कह रहे हैं कि आप तो किसी को भी बना सकते हो। साहब क्वालिफिकेशन दिए, आप बिल तो पूरा पढ़ लो, इसमें क्वालिफिकेशन दिए, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार ही बनेगा, किसी को नहीं बना सकते। सेक्रेटरी रैंक क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो आपको बिल तो पढ़ ही लेना चाहिए था। पत्र जब आईएएस ज्वाइन करेंगे तब। दूसरा साहब, मैं ये जो जवाहर सरकार साहब ने कुछ मुद्दे उठाए, आपने अच्छी बात कही कि साहब बाढ़ आ गई थी, वोट पे भी नहीं, अच्छी बात है, वोट पे भी चुनाव की प्रक्रिया। मैं तो राजस्थान का रेगिस्तान का रहने वाला, सब धोरे हैं मेरे यहाँ तो सैंड ड्यून्स हैं। मैंने देखा हम ऊंट पर बैठ करके वोट देने जाते थे। चुनाव आयोग की इतनी खासियत है कि हमारे जो दूर गांव था उसके लिए ऊंट गाड़ा रखते थे कि ऊंट पे बैठ करके वोट देने जाओ। तो ये सब प्रक्रियाएं होती रही है साहब चुनाव आयोग ने, और ऐसे हम ईयर टू ईयर, इलेक्शन टू इलेक्शन सीखते आए, और चुनाव आयोग ने अपने साख भी कमाई है और निष्पक्षता भी बरकरार रखी है। एक विषय जो कहा चड्डा साहब ने, पता नहीं कांग्रेस पार्टी कैसे लेगी मुझे पता नहीं, इन्होंने कहा आप कुछ ऐसे अमेंडमेंट कर लो, मेरे सुझाव मान लो, मैं सारे अपोजिशन को एक कर दूंगा। तो ये क्या खड़गे साहब का रूप धारण करके बोल रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को हो गया था। मैंने कहा क्या विषय था है? No, Randeep Surjewala ji, no reflection has been made to you. No, not attributing to you. Not attributing to you. No. I've taken note of it. Attributing neither आपने to कहा you, था साहब, मैंने सुना not to है, Mr. Raghav आपने Chadha. कहा था कि आप मेरे सुझाव मान लो, सारे अपोजिशन को मैं एक कर दूंगा। तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह बोल रहे थे, तो मैंने कहा आपने खड़गे साहब का स्थान ले लिया क्या? मैंने इतना ही कहा। This is a lighter moment. Go ahead. अच्छा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये कोई जो हम बिल लेकर के आए हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत ही हम लेके आए हैं। संविधान के आर्टिकल 3242 में जो प्रावधान है उसके तहत ही लेके आए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 में है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उसके तहत ही लेके आए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें। ये बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है। थैंक यू सर। एक सेकंड तिरुजी, एक सेकंड। Sir, there is no provision for clarification. No. I shall now put them. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Okay. One second. Sukhendu Sekhar Ray. No, he had indicated earlier also. I have only one constitutional point. Okay, one second. Because according to my party, this bill suffers from unreasonableness and arbitrariness. Why I am saying so? Because there is no reasonable nexus between the objects and the provision of bill, in as much as nothing has spelled out in the bill as to why the Chief Justice has been replaced by a minister, although the norm set up by the Supreme Court continued for long 8 years and continued to be held good. So why this replacement? There is no clarification from the minister. I shall now put the amendment. 1 second. Okay, Honorable Minister. I shall now put the amendment moved by Dr.